नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं प्यारे साथियों, मैं श्रीमती जी वसुंधरी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गोलकुंडा, सभी को आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 में हुई थी और तब से पिछले 57 सालों से हमारा संगठन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो आइए आज हम सब केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य एक शपथ लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य भारत को एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र बनने हेतु निस्वार्थ भाव से कार्य की शपथ लेते हैं। देश को उन्नति के चरम शिखर पर प्रतिबद्ध करने के लिए हम सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अपने कार्यों एवं सेवा भाव द्वारा देशवासियों के हृदय में देशभक्ति तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करने की शपथ लेते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर हम देशवासियों के विकास और उत्थान हेतु संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। स्वर में गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, भारत का स्वर में गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर में गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। अनेक पर एक प्राण, सर अनेक पर एक गान। तन अनेक पर एक प्राण, सर अनेक पर एक गान। हम कण कण पर छा जाएंगे, बनकर भारत का स्वाभिमान। तत्वं पोषण अपाविनु, तत्वं पोषण अपाविनु, का चंद्र ज्योति बरसाएगा। स्वर में गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, भारत का स्वर में गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर में गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय
respected teachers, dear parents, and my dear students. It's a great pleasure to greet you all on the occasion of KVS Foundation Day being observed on 15th December. As you are all aware of it, KVS, it's an autonomous organization under Ministry of then HRD, Government of India. Now it is under the Ministry of Education, Government of India. Was established in 1964 as a humble beginning with the 24 regimental schools. Over a period of these 56 years, it has grown into breadth and length across the country and abroad also. It is catering to the needs of all central government employees, and its main mission is to develop national integrity and universal brotherhood. KVS has been putting its best efforts to develop a kind of unity among all the citizens of this country at the tender age in all KVs through various cultural programs and syllabus and same pattern of education, same system of examination, same method of admissions. So that way a uniform pattern is followed across the country to feel that we belong to India, we are basically Indians. This Indianness is inculcated among all the youngsters through this beautiful way of education and co-curricular activities. And within these 15-7 years, so many students, the alumni of this KVS, I can say not KVs I am saying, it's a KVS alumni, has reached the most coveted positions and occupying several important positions both in India and abroad, bringing laurels to our country and serving the country and the society. We feel the globalness or global feeling is developed among all the citizens. So this kind of beautiful educational pattern is found only in KVS. That's why it shows the progress and development of KVS because of this mission and vision. And on this occasion, let us orient ourselves for this noble cause of Indianness, universal brotherhood, and maintaining cultural heritage of our great country, our motherland, so that tomorrow once the students leave the KVS frontiers, they should feel the noblest persons, they should become the noblest human beings and the noblest persons to serve the society, to serve the nation. So once again, I take this opportunity to greet one and all the happy KVS Foundation Day. Jai Hind. Thank you. A warm and cherished morning to everyone. It's my pleasure to propose a vote of thanks on the auspicious occasion of 57th KVS Foundation Day. I would like to thank Basundari Madam for her unequivocal and captivating words. I would like to thank Stuti Madam and her singing and dancing group for their electrifying and magnifying performance. I also thank Tanisi Yadav for her wonderful speech. I would like to thank Principal Madam for all the words of wisdom, those radiated source of energy within us. Last but not the least, I extend my heartfelt wishes to staff members, students, audience, volunteer and parents for making this special day more special and a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you.